Okay, Bismillah Rahman Rahim. So we talk about the DOM. We had to talk about a lot of things actually before we started DOM, but uh, just pick up this topic of DOM, which is very important. What's called as a document object model. So when we talk the document object model, this is where the JavaScript gives the behavior. You know, we talked about that you have the structure which is given by the HTML, then you got a style which is given the CSS, then the JavaScript gives the behavior to this structure and to this style of the web page and gives the soul actually, and it is done by the document object model. So what technically document object model is, it gives you an interface. Okay, because when you say the behavior, that you want to change the behavior of your web page, that means this page has to be interactive. Okay, this page need to be changed dynamically. Statically you created HTML, you have, for example, you have a house, you created a house. Okay, the statically you created it. Okay, and you styled it, you colored it up, and there are all the things here. But now you want to change it, you want it to happen something, that somebody presses the doorbell, something should happen. There should be a window, that you press a button, window should open. Okay, and you want to change the color, you want to change the structure, you want to add stuff here. Maybe you want to add new kitchen, you want to have new garage to the house. So these things can happen only when you have an access to this structure and to this style. If you do not have an access, then you can't change it. Say for example, you have a mobile phone. In mobile phone, you want to take a picture, you have a camera on a phone, but unless and until you do not have an interface which has some kind of a button or whatever it is, which internally accesses that camera, and you can take a photo. So for a user, we always need an interface. If at all we want to dynamically do something, we want to change something. Okay, so if you want to change the structure of, say for example, this house or the HTML document, then you need to have the access to the HTML of that page, number one. If you want to change the style, the coloring, the look and feel of the site, of the website, then you need to have an access to the CSS. For that, you need to have some kind of an interface which will be given to you. Say for example, I say mobile phone, and then there are all the things, the interface, the buttons you want to call. Your mobile phone is able to call it, but you have an interface in terms of call button where you press in and you can call somebody. Right? Is that clear what I'm saying? So same way, we have the DOM, the document object model, which JavaScript works on, which actually is what? It is an interface to the programmer. So a programmer has a handle. Like in a mobile phone, you got a call button, which is a handle for you to call somebody. Similarly, for a programmer, you have an interface, which is the DOM. So what DOM does is, it gives you the objects, it gives you the collection of objects in a hierarchy. In a hierarchy where there is a parent, then there are sub children, then there are grandchildren, and so on and so forth. And these, all of these nodes in a tree structure, this will be like a tree structure. This tree structure document will have the nodes, and these nodes are nothing but the objects. Everything is an object, treated as an object, and it has all those methods and attributes where we can work with this. Because if in programming language we say this interface, this can be the methods. For example, we have a class where we have some data. For example, we have a name,
we have the roll number. It's a student class, and I want to change the name. I want to change the roll number of a student class. So how can I do that? For that, we are given some methods. Okay, say for example, set name method, and as a programmer, you access the set name, and using the set name, you can set the name. So this is what interface means actually. Okay, you have an interface. So interface is something which is given to you so that you can manipulate something. Okay, so as a programmer, you can manipulate. What will you manipulate? You can manipulate the structure, which is your nothing but HTML, and you can also manipulate the style, which is your CSS. And you can have what is called as an event driven programming. You can have an event driven programming where you will have some events. You listen to the events. For example, the click of the button, dragging of the button, mouse hover, whatever you want to do. And you want to have some kind of an interface where you see that particular object, and of that particular object's methods will give you the interface to manipulate that object. Does it make sense to everybody? Yes. Hello? Are you guys with me? Okay. Now, this document object model actually, if is the first thing which we are given is a parent object, which is the window. We have already seen that if you have an empty project, you are given the window object where everything belongs to the window, right? Even your global variables, you create somewhere some outside variable, you create not int, and this is not C. You create somewhere a variable. In fact, it's this a belongs to the window. You could write it a, you could write it window dot a. This is one and the same thing, right? Because the moment you get an HTML document here, it will be given an object window, and this object window will be given another object, the sub object of the window called document. And this document has everything. It will give you like it is like a canvas for you as a programmer. Because if you want to paint something, but what do you need? You need the canvas, right? Where you can paint. Similarly, as a programmer, the canvas which is given to you, where you can put up those text boxes, the buttons, the pictures, or whatever you want to, for that you need firstly this canvas, right? And this canvas is nothing but the document. This is what document is. Okay, so the window is the window given to you, which has a controls like plus button, the cross buttons, and so on, the maximize button, the minimize button. Okay, and but the white space which is given to you is your canvas, which is the document, wherein you can put stuff onto it. So if you want to see this, firstly, that I create here some empty project. For example, I'm creating firstly the index.html, and I'm creating here script.js, and in the index.html, what I'm doing here is I'm creating the boilerplate, okay, the head and the body, and at the end of the body, because I want to link my JavaScript, and I told you many times that it has to be at the end of the document, where I say script colon source, and I say here script.js. I want to link this script.js with this file, right? If I give it a go, then there's nothing in it right now. I'm not putting up anything in it, but it will have it's still having this head and body and all that. So these tags will be actually the part of my the tree which I was talking about, that I'm telling you that the first thing I will be given is a window, which is by default there, and then I will giving canvas in the form of a document, and on that canvas I'm putting up these things like head. I'm getting the HTML firstly, then head, and so it will have the HTML. This HTML will be
as an object on this tree. Okay, then I will have here in the HTML, I got the head. This head will be created as an object. And then we got the body, and in the body we may create tons of things, right? And under them we can have tons of things like the headers, the divs, okay, paragraphs and whatnot. All the HTML you can build up. Whatever you build up, it will be the part of this tree. Okay, and they will be all objects, and there will be, oops, the object oriented programming paradigms working on here. And the interface we are talking about will be the methods, that these objects will have the methods which I can use to manipulate them. For example, I have a text box. I have a text box, and this text box will be an object. It will be treated as an object because we are working on the DOM, because we are working on a DOM, document object model. So everything is treated as an object, and the object has methods. The object has typically two things. One is the attributes, that is the data part, that is how big this is, how to make it, and all that. That will be the data part. Okay, that is what's called as an attributes. And second thing is the behavior. Behavior is your methods. Okay, now these methods, जिनको आप C में functions बोलते थे, now these methods will interact on this. For example, you have a text box, you will create this text box and all, but now you can work on this text box. For example, you want to change its text. Okay, you can say this text box is dot, I say whatever this text box name is, the object name is, that will be here, and then dot, because if you want to access these methods, then you use the object dot. So whatever the name of this object is, say let me call it txt for example right now, then dot, you can say text content equals to Junaid. Now Junaid will be in the text box written. So you are changing it using the methods. How? Because it is treated as an object. So no matter what you do in your HTML, everything will be treated as an object, and the object has the data part and the methods, and these methods will be your interface. As a programmer, you will use these methods to manipulate that object, whether it is a text box, whether it is a button. Maybe this is a button here and it's saying click me, and you want to change it, this click me, to submit. You want to change its color, you want to change its size, that means you want to change the structure itself, you want to change its HTML, that you want to change its, because HTML is giving you the construction of this button, that's the structure of this button. You want to change that, you want to make it bigger, you want to make it smaller, you want to make it different, you want to style it up, you want to change its color, you want to change its text, and you want to change its behavior, that on the click what it should do, that if you click somebody, so you are listening to this, and you are listening to the click of event of this button, and when the click happens, what you want to do, what behavior you want to do. So this all can be done when this button is treated as an object, and this object has the methods which will be our interface. These methods will be the interface of a programmer. Does it make any sense now what I'm talking about? Now if you just do nothing but just go live to it, okay, and we have nothing in it, right? I go to the console, and why is this coming up, setting and all, and I'm saying the window, I'm already having a window here. As you see, this is the window object, and it has tons and tons of things in it that is already being there, which is on the top of the hierarchy of my tree. Okay, and if I say even a document, I got the canvas, I'm telling you the document is my canvas. Okay, and if I say document, the document is there, and it has all those things. Like right now the document has the head and the body. As you could see, we have created the HTML, we created the head, we created the body. So whatever you create, that will be on the document, because document is what, if I write here nothing, for example, I am putting up here nothing, I'm saying I'm saving it, I'm putting, this is totally empty,
right? So I got totally empty. I even do not get the. So if I say document, is document there or not? Yes, document is there. uh, why is it still showing head and all? Maybe I need to refresh it first. Okay, I call it document. It is still showing me, I think, the same thing, right? What I will do here is I just dispose it off and go live. Okay, inspect it now, console, and if I say the document, okay, it is still showing up the things because basic, uh, the head, the style type is text, css, and the body where we have these stuffs, it is automatically stuffing these things, even though I have not created it. But still, if you have an empty thing, you will have an empty document. Okay, you will have an empty document, which is this white space. Okay, the white color which is coming up on your on this thing, even though you have not written anything, but by default things are coming up, which is making up this no space for you, this white space for you, and that thing is your document. So I am telling you that we are having a window. Firstly, we are having what? The window object, and in the window object we have the document. In the document we have the HTML, and in the HTML we may have the other things, whatever we have, right? Getting the things what I'm saying? Now, how to manipulate? Because you want to manipulate things. You want to manipulate. You want to what? Manipulate. As a programmer, what you want to do is you want to manipulate whatever is on the document. Okay? So for that, you need the interface. The first thing which as a programmer I need is the selection. I need to select that particular thing. We have tons of things on my document, and I want to change its HTML, I want to change its structure, or I want to change its style. Okay, but first of all I need to grab that element, I need to select that element. When I select that element, firstly, then I can change its HTML, I can change its CSS, I can change its behavior. So whatever I want to do, I can do that using its methods. But first of all I need to select that, right? Okay, now if I go here and I'm creating my first document here. Okay, okay, if I say here in my script, I am saying here console.dir. Okay, and I am saying give me the document, give me what is in the document. Document, list that directory of a document. What I'm writing? Document is it? Document. Okay. Now if I go here and inspect it, so console, refresh it. It's not linking like thing. What's it happening? ये तो चला ही नहीं. तो मैं देखता हूँ पहले ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना मेरा, क्योंकि मैंने कंसोल डॉट डी आर कहा, इसको डॉक्यूमेंट कर दो मुझे, आप दे दो. लेकिन मैं देखता हूँ ये स्क्रिप्ट है कि नहीं, लिंक है कि नहीं है. अलर्ट करेंगे हम hello. Now even though I'm writing here what the alert, it's actually window.alert. ये alert आया कहाँ से? क्योंकि ये विंडो प्रॉपर्टी, क्योंकि मेरे पास विंडो दिया गया है. It is actually window.alert, right? So if I go here, it's not linked, right? क्योंकि alert आया नहीं, तो कुछ मसला है. इंडेक्स में, अच्छा मैंने तो यहाँ पे लिंक ही नहीं किया है, मैंने तो ये लिंक किया ही नहीं है. आई हैव टू लिंक माई, ये तो मैंने किया था ना, वो कहाँ गया? अच्छा, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू इट. इंडेक्स जो है वहाँ पे कैसे करेंगे हम इसको लिंक? एंड वी हैव व्हाट, इट इज़ एक्चुअली स्क्रिप्ट script.js. ठीक है ना. अब मैं यहाँ आ जाता हूँ. हाँ, नाउ इट्स लिंक्ड प्रॉपरली.
ठीक है ना, when I reload, that thing is working here, and if I inspect it, okay, and here this document is coming up in my console. The document is coming up, it is the directory, and it is telling me everything what the document has, because document has tons of things which I just listed out now. जो मेरा डॉक्यूमेंट है उसके अंदर क्या क्या है, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीज़ें आप देख रहे हो, ऑन ब्लर, ऑन कैंसल, ऑन दिस, ऑन दैट, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट का पार्ट आपको है. सो यू आर गिवन अ विंडो which is having a tons of methods in it to manipulate things, which is that is your interface, right? And the document is also having a tons of things which you can manipulate stuff on this page. Technically whatever is on this page, that will be part of the document. Does it make sense what I'm saying? Now okay, thank you. I'm saying here in my script console dot now windows alert. I will just close this. Now I'm saying console.dr document, okay, which is giving me the stuff. If I say document all भी आता था हमारे पास, है ना. Let me check if the document all I have. ये पुराना ही दिखा रहा है मुझे जैसे, ठीक है ना. एक मिनट, अलर्ट तो मैंने बंद किया ना. हाँ, डॉक्यूमेंट ऑल का कुछ इशू है. डॉक्यूमेंट ऑल हमारे पास होता था. डॉक्यूमेंट ऑल में आई हैव जस्ट फॉरगॉट व्हाट इज द डॉक्यूमेंट ऑल. डॉक्यूमेंट ऑल यानी कि सारा दिखाओ मुझे. आई डोंट नो, इट्स नॉट शोइंग मी. यानी कि जितनी भी मेरे पास है, लेकिन कंसोल डॉट लॉग करना पड़ेगा हमें, है ना. कंसोल डॉट लॉग document 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 नहीं, I just forgot that, leave that. Anyways, so अगर मेरे पास अब जैसे मेरे पास यहाँ पे एक चीज़ है कि मेरे पास यहाँ पे टाइटल है. आई वांट सेलेक्ट दिस टाइटल. सो अगर मैं यहाँ पे इसको कहूँगा डॉक्यूमेंट, because I believe everything belongs to the document. If I say document dot title, because whatever is on the HTML, it is part of the document. So your head, your body, your this title, and everything belongs to the document. So I can say I'm saying console.log document dot title. I will first see whether it is selected or not. So just refresh it, and the document is coming up, okay, and it's telling me the title is document, because you have put up the title as document here. No, if I say right here, for example, title as Junaid, okay. Now if I go here and give it a go, now it's telling me the document is title is what, Junaid. And if you want to change it, say for example you want to change this, now you have an access to the title, you can change it. You can say what, document dot title equals to learning DOM, maybe, okay. Now if we give it a go, and now you see here on the top the title is coming up, learning DOM is changing. So it was initially it was Junaid, the title, but now you see it is coming up. So if I refresh it, okay, it is telling me that it's the learning DOM is title, okay. So you can change it. Now the first thing which we need to do, because we want to have a handle to the particular thing. For example, if I just go here and I create something here in my this, maybe I say firstly here maybe dot box, okay, or command C. I will have some IDs of box, for example hash box, and it will create me a div within box. And here I want to create an h1 header file with an ID of with an hash head, and I'm saying here learning DOM, okay. Now maybe I got another box here. I say hash, what's hash box 2, okay. And in this box 2 I'm having maybe I'm having a list of books,
For example, maximum times I show this thing. So I say list of box, list of. So I got the UL tag with an ID of books. For example, let me write it small letters, books, and inside this, the unordered list will have the li, okay, within class name of list, and I will have four such things, four such lists. So I am creating an unordered list with an ID of books, and there are the list of books li tags, and I have, for example, the Java programming. Then maybe I have the Java script. I have the Node.js. I have the PHP, for example. Now if I see it on my page, it's coming up, right? And maybe I have the box 3 also here. I got dot hash box 3, okay, and inside I'm having some text boxes with a name, and I'm having some input tag maybe. Then I say input, type is text, type is text. This is my input text, and I name it as maybe I say txt name, okay, and I just option down arrow. I got another one, so maybe this is your class, which class you belong to, and maybe I say txt class, okay. And I got one more box here, so hash box 4. In this I got the buttons, button, button. Maybe this is the submit, button submit, and I call it submit, submit, okay. And this guy button type is submit, and you can have its whatever you want to have. Maybe on click you want to do something, on click call the function fun. Now I have these things here, for example. Now I want to select individual stuff. I want to select, say for example, this this h1 tag, and I want to change its text, I want to change its color, I want to change its maybe on the submit button I want to make it, the text made it that the form is submitted successfully, for example. I want to change the subjects from these books and manipulate it. I want to change the name and what is the content of this here in this text box. Similarly in this class, and or I want to change the submit button. I want to do something to these guys. These are all on my canvas now, right now. So I want to have an access to it. So everything will be treated as an object. Whatever I am having here, everything is treated as an object, and all the objects these are will have the methods. So this will be planted as a window in your browser. Then there will be a there will be a document, and in document there will be the firstly the HTML. In HTML there will be the head, there will be the body, and in the body there will be these stuffs planted as an hierarchy of nodes, and all of these nodes will be nothing but the objects, right? And these objects will have the methods, and these methods will interact, will act as what, our interface to the programmer, which we can, using those methods we can manipulate, right? We can manipulate the structure, that is HTML, we can manipulate its CSS, okay, and even the behavior and everything we want to do. So if we want to select a particular thing, then there are many ways to select it, okay. First is get element by ID. I want to select it using this ID. So I want to select it somebody who has an ID of an head. So I go to the, maybe I want to do this on the click of a button, when the somebody clicks this button, okay, button. So type is submit on click. When you say on click fun, you are when somebody clicks that button, okay, you have to call a method.
which is the function fun. So that means I will create this function here. I will say a function fun. So I'm doing it on this function here. Okay, now I don't want to do these things. Okay, I just close them. Okay, so on the when somebody clicks this button, when somebody clicks this button here, which is here, when somebody clicks this submit button, so on the click of this button, I want to change this learning DOM. I want to change this. So if I want to change this, the first thing I need to do is I need to select it. I need to have an interface which will help me to select this thing, because there are tons of things. मैं किस पे काम करना चाह रहा हूँ, तो उसको पहले आपको select करना है. सो सेलेक्ट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें हैं. एक चीज़ आपके पास है, that's called as get element by id. That's called what? Get element by id. I will put it in some object. We usually use the it's any variable you like. So I say get element, but you cannot say directly get element, because where is it, where is it, where is this, where is this written on the canvas, right? Where is this learning DOM? It is on a canvas. What is your canvas? Answer me. The document. So you have to write here document dot, because this is the part of document. So document dot get element by id, and I am telling you the my id is, for example, the head. So head will be selected. So let me check it first. I will console.log. पहले मैं देखूंगा कि है भी मेरा ये select हुआ भी कि नहीं हुआ. So I say e, console.log e. Just give it a refresh it, and if the e is coming up on the, because this will happen only when you click the button, right? I'm saying submit, and indeed it's selected, which is telling h1 id is head learning DOM. So it's being selected now. So what this is in a variable e. So e is the handle to that particular element which is having the id head. So I can, that means using the id I can select anyone which has with any id on the document, on this document, because on this document everything we have here is an object which is having some id or class name or even tag name or whatever. We can use the what's called as a query selector. We have many ways to select these, all these things. They are all here on this document, and I can select using the document dot, because we have to use document dot because the parent object is the document. And these whatever I am doing here, these are all objects, these are all treated as objects, and they have their own methods. The document has their own methods, these objects will have their own methods which will help me to work it out. But now if I want to select this, I selected it using the document dot get element by id, and iska id हमने head रखा था, so it is getting selected, it's getting selected, right? So now I can manipulate it. Now it is time to manipulate stuff on this. यानी कि मैंने इसको select किया, okay, और उसके बाद अगर मैं इसमें change लाना चाहता हूँ, तो I can say now e is my handle now to it. E is my handle to this h1 tag which was saying learning DOM or something. I say e dot text content using camel case equals to, say for example, I'm saying finished learning DOM, for example, or submitted or something. Now if I give it a go, now you say it is changing, finished learning DOM, it's coming up यहाँ पे. So that means I could manipulate it now, right? Maybe I want to change its background color. So if you want to change the background color of the label, how you do it? You have a handle to this, which is what? Shabash. Handle क्या है मुझे इस h1 का? E. E dot, अगर मैं इसको change करना चाहता हूँ इसका style, then I have to use the style dot e dot style dot background color. पता नहीं दिखाने क्यों नहीं रहा है. Background color is equal, for example, मैं इसका background color red बनाना चाह रहा हूँ. ठीक है. Now when you learning DOM था मेरा, जब मैं इसको click करूँगा तो एक तो ये इसका text change हो गया और इसका ये भी change हो गया. यानी कि मैंने इसका HTML भी change किया और मैंने इसका style भी change किया. So we can do that, no problem. And
हमारा जो रन टाइम पे मैं इस बटन का जो है ऑन क्लिक पे मैं काम कर रहा हूँ, उसका बिहेवियर चेंज कर रहा हूँ मैं, है ना? बात समझ आई? अगर मैं अब अगर मैं यहाँ पे अब एक चीज़ करूँगा मैं काम, आई जस्ट क्लोज दिस, ब्रेस रखनी पड़ेगी ना। अच्छा जी, अगर मैं कह रहा हूँ ई इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, मैं क्लास नेम से सिलेक्ट करना चाहता हूँ। और अगर हमने देखा यहाँ पे कि जो मेरा HTML है, मैंने यहाँ पे जो मेरी लिस्ट बनाया था जानबूझ के, ताकि इनका सबका एक ही का क्लास नेम हो, बिकॉज क्लास नेम इज ए ग्रुप, anybody can belong to this class. So I want to select those guys who have a class name list. So I am saying get element by class name, and that is the list, list. And now what will be in the E? Can anyone tell me? If I say console dot log E, what will be in the E? Yes. Anyone tell me what will be in the E? So what will be the E? It will be the array. It will be what? It will be an array, because all the things which has the class name as a list will be selected, as you could see here, li.list, li.list, li.list. So it's an array, because we have four guys which has the class name list, and that to li.list, as you could see here. अगर कोई और भी क्लास होता है जिसका लिस्ट क्लास नेम होता है, वो भी सिलेक्ट होता है इसमें. So all these guys are selected. Okay, now if I want to change I want to change this Java programming to say for this PHP यहाँ पे है. I don't want PHP. I want say for example the React. In case of I want to change it to React, not the PHP. So how can I access it? Because this is an array now. The E is the array. Now E is the array which is an handle to this. Exactly. You see, this is an array here now. Okay, then these are the blocks. This is the 0 block, this is 1, this is 2, and this is going to be the 3. And E is pointing to this. It's like an array now, right? And E is pointing to, पहले में आपका Java programming है, दूसरे में JavaScript है, तीसरे में आपका Node.js है, और यहाँ पे PHP है. 0 1 2 3, यानी कि third location पे. So you can simply say E of 3 and change it, right? ठीक है ना? So यहाँ पे आप कह सकते हो किस में चेंज करो आप, E of 3 में, और उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है ना, उसका अपना मेथड होगा ना, बिकॉज मैंने कहा कि वो भी एज एन ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उनके अपने मेथड से. टेक्स्ट कंटेंट उसका मेथड है. जो कंटेंट है, टेक्स्ट कंटेंट है, वो चेंज करो टू फ्रॉम PHP टू, मैंने कहा था रिएक्ट. ठीक है, लेट्स ट्राई टू सी if it happens. If I click the submit, now indeed it is changed to React. Now the PHP is gone, it is React. So I'm able to grab this and all that. अगर मैं इसके क्लिक पे सबको ही हाईलाइट करना चाहता हूँ, आई वांट टू मेक इट्स कलर ग्रे, लेकिन सबका, एक का नहीं. अगर मैं यहाँ पे इसी का करूँगा, आई कुड से हियर E of 3 डॉट क्या बोलेंगे इसको, स्टाइल, हाँ, क्योंकि चेंज कर रहा हूँ ना मैं, STYLE डॉट बैकग्राउंड कलर, हाँ, बैकग्राउंड BACKGROUND. पता नहीं क्यों नहीं दे रहा यार, G मेरा ख्याल स्मॉल है, क्योंकि बैकग्राउंड एक ही वर्ड है ना. बैकग्राउंड color COLOR equals to, say for example, gray. Now if I click it, now it becomes gray. Now I want कि सारे के सारे जो है ना, उनका जो है वो इसका ग्रे होगा, और इन तीनों का मुझे बताओ साइन करके. आई वांट टू चेंज इट्स कलर टू साइन, जो ऊपर वाली तीन है, लेकिन तीनों का ये होना चाहिए, और इसका ग्रे होगा जो सिलेक्ट है, लेकिन बाकियों का ये होगा, या ये तीन का ग्रे होगा और इसका जो है इसका साइन होगा, यानी कि इसका मैं साइन करूँगा.
क्योंकि ये सिलेक्ट हो गया फॉर एग्जांपल, तो इसका साइन हो गया, इस इन बाकियों का ग्रे होना चाहिए। तो कैसे करूं मैं, बताओ? एरे है ना। Why would you for each simply for off? What about if I use for in? For I in e, right? If I use in, tell me, if I use in, how I change it? If I use in, because in में क्या आ जाएगा मुझे? इंडेक्स आ जाएगा। इन में आपका इंडेक्स आ जाएगा ना, इन में आपका इंडेक्स आ जाएगा। इफलाका çalışıyorsun gitme basanız। अच्छा, इन में आपका इंडेक्स आ जाएगा। सो हाउ विल एक्सेस द ईच एलिमेंट? लेकिन अगर आप इसमें करोगे फॉर आई इन करोगे आप, तो फिर वो सारा ही कर देगा ना। ठीक है, तो फिर ये लास्ट में करना पड़ेगा। तो फिर ये करेगा, ओवरराइड करेंगे इसको कमांड एक्स, ये फिर करेंगे लास्ट में। फिलहाल बनाए ना हमन सारी ग्रेस, लेकिन कैसे बनाऊंगा मैं? आप कैसे करूंगा मैं, क्योंकि इंडेक्स मेरे पास है। ई ऑफ आई कहूँगा ना मैं, क्योंकि इंडेक्स आ रहा है ना वहाँ से। ई ऑफ आई डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। और क्या करोगे, बैकग्राउंड कलर कैसे बनाओगे आप? ग्रे, हैं, GREY। ओके, सो इफ आई गिव इट ए गो नाउ, क्लिक इट, तो सारा हो गया ये। कुछ एरर है कहीं पे, बैकग्राउंड कलर कहीं पे गलत लिखा मैंने। एरर किस में दिखा रहा है? बैकग्राउंड कलर क्यों दिखा है इसने? अनकॉट टेबल कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड सेटिंग बैकग्राउंड कलर एट फन ऑन क्लिक। हुआ क्या है, इसने जो मैंने सबमिट किया सबका, इसने तो किया ग्रे, लेकिन ये वाला नहीं कर रहा काम, ये वाला नहीं कर रहा है काम। एक मिनट, इसको देखते हैं, मैं बंद करूँगा एक मिनट। ये यही प्रॉब्लम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आई सबमिट, ये तो फिर भी एरर दिखा रहा है। कुछ काम तो कर रहा है, लेकिन एरर कौन सा है? टाइप एरर आ रहा है कुछ। हाँ, क्या टाइप आ रहा है, कोई बताएगा मुझे? गेट में क्लास में क्या लिस्ट, मैंने E3 किया, टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू रिएक्ट। ओके, फॉर आई इन ई मैं कह रहा हूँ अब, ई ऑफ आई डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर बना रहा हूँ मैं ग्रे। ठीक तो है? तो इसमें इशू क्या आ रहा है? मैं ये बैकग्राउंड कलर क्या मसला कर रहा है? एक मिनट, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसको रिएक्ट बना रहा है आराम से, वो बना रहा है। लेकिन अगर मैं E3 को ही, जो मैं E3 है उसका बैकग्राउंड कलर, बैक स्टाइल डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल से फॉर एग्जांपल साइन, तो इसमें प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसमें उसमें क्या इशू आ रहा था इसको? आई डोंट नो व्हाट हैड हैपेंड देयर। अगर मैं फॉर ऑफ करूंगा, मुझे पता फॉर ऑफ से मैं सबका ही साइन करना चाहता हूँ। हाउ आई डू? फॉर से फॉर एग्जांपल आई ऑफ ई, इस एरे जो मेरे पास ई है उसमें फॉर ऑफ लगा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए चेंज, इसमें अगर सबका ही साइन करना चाह रहा हूँ ना मैं, तो ब्रेस लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि एक ही था। चलो अब मैंने लगाया। इस यहाँ पे क्या चेंज करूँ मैं, जल्दी बताओ। यस, एब्सोल्युटली आई डॉट, क्योंकि आई में अब आपका पहला इंडेक्स आएगा, पहली बार आई में आपका वैल्यू ही आएगा, यानी कि ये वाला बंदा आएगा, जावा प्रोग्रामिंग वाला बंदा, उसका हैंडल आपके पास आई में है। और आप कह रहे हो आई डॉट स्टाइल और बैकग्राउंड कलर साइन, वो उसको साइन करके देगा। फिर दूसरी बार जावा स्क्रिप्ट वाला आई में घुसेगा ना, तो आई, बिकॉज आई में अब वैल्यू ही डायरेक्ट घुसेगा। सो आई विल हैव द फर्स्ट इंस्टेंस व्हाट इज इन द ई, then second instance and third and so on, and I think it should work fine.
ओके किया है इसने, तो अब तो एरर नहीं दिखा रहा, पता नहीं वो उसमें एरर क्या था, वो शायद हमने गलत लिखा था कहीं पे स्पेलिंग, ये बैकग्राउंड कलर कुछ, एंड सो ऑन। ये बात समझ आई, वेरी गुड इफ्ला, दैट्स नाइस। अब एक और चीज़ मेरे पास है कि मैं इसको आई वॉन्ट टू सेलेक्ट यूजिंग मैंने कहा था क्लास नेम, अब हमारे पास है कि हम टैग नेम से सिलेक्ट करना चाहते हैं। एक तो हमने किया एलिमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी से सिलेक्ट, अब हम क्लास नेम से करें सिलेक्ट, अब हम डायरेक्ट टैग नेम से ही सिलेक्ट करेंगे, यानी कि डिव से करेंगे सिलेक्ट, या हम सीधे इनपुट बोलेंगे भाई मेरे पास जो इनपुट्स हैं या बटन्स मेरे पास हैं, या जो टैग नेम है, जो भी आपका टैग नेम है, जैसे आपका बॉडी टैग नेम है, HTML है, जो भी आपके टैग नेम्स हैं ना यहाँ पे, जैसे डिव है, ये जो भी आपका टैग नेम यहाँ पर है, LI है, UL है, ठीक, या आपने इनपुट कहीं पे किया हुआ है, ये जो इनपुट है ये टैग नेम है, आप यूजिंग द टैग नेम सेलेक्ट करना चाहते हो। सो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा कि भाई साहब मुझे E इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ये रहा आपका टैग नेम, ठीक है, ये टैग नेम से करेंगे सिलेक्ट, और मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब जो भी मेरी डिव है ना उसको सिलेक्ट करो, तो उसका मतलब क्या हो गया कि जितने सारे डिव्स हैं वो सब के सब सिलेक्ट हो जाएंगे, ये पहला डिव, दूसरा डिव, तीसरा डिव, चौथा डिव, यानी कि ऑल डिव्स विल बी selected, right? So that means कि this will again have the multiple values. So if I say console.log e, if I अगर मैं e कर रहा हूँ print यहाँ पे console में, तो भाई साहब ये सारे के सारे div जितने भी थे, box 1, box 2, box 3, box 4, जो सारे के सारे divs हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक हो गया, ठीक है ना। अब आप फर्ज कीजिए पहले वाले डिव का आप बैकग्राउंड कलर एक्वा बनाना चाहते हो, सो हाउ विल यू डू दैट, पहले वाले डिव का, बिकॉज अब आपके जितने भी डिव्स हैं, वेरी गुड, क्योंकि वो एरे है, सो E ऑफ 0 डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू साइन, नाइस। यानी कि अब मैं जो काम करूँगा कि जो पहला वाला डिव है, ये तो हुआ ही नहीं काम, हमने क्या गड़बड़ की, ई में तो सारे आ गए, तो ये तो दिखा रहा है ना सारे आ गए इसमें, हाँ, लेकिन बैकग्राउंड कलर इसने चेंज ही नहीं किया ना इसका। कैन एनीबडी स्पॉट द एरर कि काम मसला हो गया, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, तो मैं ठीक कर रहा हूँ। ई इक्वल डॉक्यूमेंट बाय आईडी टैग नेम मैंने किया डिव, अब ई के अंदर मेरे पास क्या है, कमांड S कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं E ऑफ 0 पहले कंसोल डॉट लॉग करूँगा, E ऑफ 0 कि इसको मैं बंद करूँगा एक मिनट, आई जस्ट वॉन्ट टू सी वॉट इज E ऑफ 0, दैट इज योर that is the first div, right? Okay, that is the first div. What is E of 1? Is it showing error or is showing the proper thing? Submit. Oh, so इसमें बेसिकली क्या हुआ कि आपका जो VS ये है ना लाइव सर्वर, वो आपको अपने डिव्स एक्स्ट्रा लगाते हैं, जो मैंने उस दिन दिखाया था आपको, यानी कि जो आपका ये लर्निंग डॉम जिस डिव में है ना वो 1 पे है ना कि 0 पे है, दैट वाज द इशू। सो इसको हम क्या करेंगे, हम इसीलिए वो भी एरर दिखा रहा था वहाँ पे, मैं समझ में आया मुझे अब। सो अब कंसोल लॉग आप क्या करोगे, यहाँ पे E ऑफ 1 को आप चेंज करो, बैकग्राउंड कलर E ऑफ 1 को दे दो, तो अब आ रहा है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा डिव्स हो जाते हैं जो कि आपका ब्राउज़र या VS कोड आपके अपने एक्स्ट्रा डिव्स लगाता है, तो आपके 0 पे एक डिव था, वो आप देख सकते हो वहाँ यहाँ पे कंसोल में एंड ऑल दैट, वो मैंने उस दिन दिखाया था, सो कि वो एक्स्ट्रा डिव्स, तो ये आपके 1 पे आ रहा है, तो इसलिए ये 1 वाला डिव जो है उसके ऊपर काम किया, तो उसका, तो यानी कि अगर मुझे इसकी लेंथ इंक्रीज़ करनी है, उसका विड्थ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी हाइट चेंज करना चाहता हूँ, E ऑफ 1 डॉट, ये स्टाइल का मसला है ना, हाइट वगैरह, सो स्टाइल डॉट हाइट इज इक्वल कर दो से फॉर एग्जांपल 6 RAM,
लेट अस सी। जब मैं ये करूँगा सो इसकी हाइट भी इंक्रीज होगी, यानी कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये एक तरीका है सेलेक्ट करने का, जो मकसद यहाँ पे दिखाने का है कि मल्टीपल वेज टू सेलेक्ट थिंग्स। देन यू कैन यूज द मेथड्स लाइक दीज मेथड्स टू मैनिपुलेट द स्टफ, राइट? एज ए प्रोग्रामर दिस इज व्हाट इंटरफेस मीन्स यू हैव। अब एक और तरीका हमारे पास है, दैट्स कॉल्ड द क्वेरी सिलेक्टर। दैट्स कॉल्ड व्हाट? क्वेरी सिलेक्टर। यानी कि अगर मैं कहूँगा यहाँ पे हमने कितने क्या क्या सीखा, पहले एक हमने गेट एलिमेंट बाय, शाबाश। दूसरा क्लास नेम है, नहीं टेक्स्ट कंटेंट फिर हो गया उनकी मेथड्स, वो तो हमेशा ही चलेगा। मैं कह रहा हूँ सिलेक्ट, सिलेक्ट कैसे किया, एक तो आईडी से किया, एक क्लास नेम से किया, तीसरा टैग नेम से किया, है ना? और चौथा हमारे पास है क्वेरी सिलेक्टर। क्या है? सो आई एम सेइंग ई इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्यू यू। हम अक्सर फिर क्वेरी सिलेक्टर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है। यानी कि ये जो आईडी है, ये आईडी को खाली सिलेक्ट करेगा, इसमें हैश लगाने की ज़रूरत है नहीं, ये हमें पता है कि भाई ये आईडी है, हेड जो है आईडी है। और यहाँ पे डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्लास नेम में, क्योंकि हमें पता है कि ये क्लास नेम है। लेकिन जो हमारा क्वेरी सिलेक्टर है वो आईडी हो, आपका क्लास नेम हो, आपका टैग हो, या कुछ भी हो, वो उसको सिलेक्ट करके देगा। तो लेकिन यहाँ पे बताना पड़ेगा हमें कि अच्छा इच्छा क्लास के नीचे इज इट है, दिस इज से फॉर एग्जाम्पल मैं लिस्ट को करना चाहता हूँ, सो आई विल से डॉट लिस्ट। वाई? बिकॉज I have to tell it that query selector that the list is a class, so I have to say dot list. लेकिन जब मैं console dot log करूँगा, so what will be in the e? Can you tell me? जी इफला की मुझे समझ नहीं आ रहा इफला क्या बोल रही है, but it won't be array. It won't be array. Let us try to see what it will be. So e will be just the only one element, that is the Java programming, यानी कि ये खाली। हालांकि जो लिस्ट था वो सबका ही था, जो क्लास लिस्ट है वो इसका भी है, इसका भी है, एंड सो ऑन, सबका है ना, लिस्ट इसका सबका क्लास है। लेकिन जो क्वेरी सिलेक्टर है वो पहला बंदे को सिलेक्ट करता है, इट सिलेक्ट्स ओनली द फर्स्ट वन। So that is why it is selected only the Java programming, the first one, this guy, not the others. So ये डिफरेंस थोड़ी सी है। अब आप अगर आपको इसमें किसी का करना होगा तो आप पर्टिकुलर नेम दोगे उसका। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इनपुट को सिलेक्ट करूँगा, आई विल यूज़ द मैं डायरेक्ट इनपुट को करूँगा चेंज। तो यहाँ पर भी पहले अगर हम इसको चेंज करना है उसका यूजिंग दिस, आई कैन से ई डॉट वॉट। अगर मैं इसका ये जो पहला इसने किया, मैं इसका टेक्स्ट कंटेंट चेंज करना चाहता हूँ, तो क्या क्या कहें, ई डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू वेब प्रोग्रामिंग में कह रहा हूँ मैं, वेब प्रोग्रामिंग फॉर एग्जाम्पल। ठीक हो गया। तो अब अगर यहाँ देखेंगे हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये पहले वाले बंदे को चेंज करेगा, जावा प्रोग्रामिंग को वेब प्रोग्रामिंग बना दिया इसने, क्योंकि ये एक ही बंदे को सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है ना? तो इसमें आपका जो एक चीज़ है कि इसमें लेकिन आप किसी को भी कर सकते हो, आप आईडी को सिलेक्ट करते हो फिर हैश लिखना पड़ेगा। ठीक है? अगर मैं फॉर एग्जांपल उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसका नाम था हेड, फॉर एग्जांपल हैश box 3, so it will select only the box 3, it will select only what? Box 3. So if I submit it, so it is giving me the box 3. ठीक है ना? सो बॉक्स 3 में आपका वो आ रहे हैं जो टेक्स्ट बॉक्सेस है। अब अगर इसका आप चेंज करना चाहते हो, से फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर, सो यू कैन से ई डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड ठीक हो गया। यानी कि नाउ इफ आई गिव इट अ गो हियर and I submit, and it's selecting the box 3 and changing its background color. So we can do that. We could select using query selector, we can select here, I can say here कि भाई साहब मुझे आप एक काम करो ना, मेरे को अब इनपुट सेलेक्ट करके दो। ठीक है? अब इनपुट जब आप सेलेक्ट करके दोगे तो
इनपुट मेरे पास दो है, एक ये है और ये है, सो इट विल सेलेक्ट द फर्स्ट वन ओनली, ठीक है ना, क्योंकि दो इनपुट्स थे मेरे पास। इनपुट टाइप्स अगर आप देखोगे इनपुट यहाँ पे एक पहला था जिसका नाम नेम टेक्स्ट क्लास है, और दूसरा है मेरे पास एक मेरे पास टेक्स्ट नेम है और दूसरा मेरे पास टेक्स्ट क्लास है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, उसको नहीं, ठीक है ना, आई वॉन्ट टू सेलेक्ट दिस गाई, कमांड सी, मैं पहले वाले को नहीं दूसरे वाले को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, देन व्हाट शैल आई डू, आई विल से हियर कि इनपुट करो मुझे, ठीक है ना, लेकिन वो इनपुट करो आप, सॉरी पहले इनपुट तो लिखना चाहिए था ना, आप इनपुट करो यहाँ पे, इनपुट सेलेक्ट करो आप, ठीक है ना, लेकिन फिर पेरेंट्स में, क्योंकि इनपुट एक एरे होगी इनसाइड जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं और जिसका नेम टी नेम है। अब बाहर से मैंने डबल कोट्स लगा दिया तो अंदर से आप सिंगल कोट लगा, वरना ये कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई तू इनपुट को सिलेक्ट कर, ये टैग नेम है सीधे, इसमें हैश और डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टैग नेम है, टैग नेम में हम हैश या डॉट नहीं लगाते। और फिर मैं एरे में इसको कह रहा हूँ, अंदर कह रहा हूँ कि भाई वो वाला बंदा जिसका ना नेम है टी क्लास, और उसी को आउटपुट कर, उसी का बैकग्राउंड साइन बना। नाउ यू सी इफ आई गिव इट अ गो, नाउ इट इज सेलेक्टिंग दिस गाय नॉट दिस गाय। सो आई इवन यू कैन, अब आप इंडिविजुअल जो उसका प्रॉपर्टी है जैसे नेम वगैरह है या कुछ है, आप वो या उसका इनपुट है, उसका टेक्स्ट आईडी ये है, उसका क्लास ये है या उसका नेम वो है, यू कैन सेलेक्ट एनी वन इनसाइड, ठीक है ना। या उसका वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, अब इसका अगर आप कहोगे ई डॉट वैल्यू जो आपने सेलेक्ट किया उसमें ना आप जुनैद डाल दो, ठीक है। तो व्हेन यू सेलेक्ट इट, नाउ यू सी द जुनैद इज कमिंग अप एज अ टेक्स्ट, क्योंकि ये वैल्यू होता है ना टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू। तो ये अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि अब जो आपका पहले इन द नट शेल व्हाट आई एम सेइंग इज दैट वट एवर यू आर गिवन द फर्स्टली यू आर गिवन द विंडो, ठीक है ना। इस विंडो के अंदर जो भी आपको वाइट दिख रहा है इट इज़ नथिंग बट द डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के अंदर फ़र्ज़ कीजिए आपने ये चीज़ डाली है, ये सारा जो है ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, जिसके ऊपर आप ये कैनवस आपके लिए है, द कैनवस ऑन विच यू आर ड्राइंग द थिंग्स। अब इसमें आपने फ़र्ज़ कीजिए ये इनपुट बॉक्स बना दिया था, यही वाला इनपुट बॉक्स, ठीक है ना। दिस इनपुट बॉक्स विल बी अगेन द ऑब्जेक्ट इन द हायरार्की, ठीक है ना। ऊपर आपका विंडो है, उधर उधर फिर आपका डॉक्यूमेंट हो गया, फिर आपका HTML हो गया, फिर आपकी बॉडी हो गई, बॉडी के अंदर कहीं पर हायरार्की में आपका ये टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, ठीक है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अपने बहुत सारे मेथड्स हैं, उन मेथड्स को प्रोग्रामर इस्तेमाल करेगा, लेकिन पहले इसका हैंडल चाहिए, पहले इसको हैंडल मतलब सिलेक्शन चाहिए, और वो सिलेक्शन आपने चाहे गेट एलिमेंट बाय आईडी किया, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम किया, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम किया, या क्वेरी सिलेक्टर आपने किया, क्वेरी सिलेक्टर। तो 1 2 3 4 चीज़ें हमने सीखी, हाउ टू सेलेक्ट दैट। वंस इट इज सेलेक्टेड एंड यू पुट इट इन सम वेरिएबल, आपको वेरिएबल में भी पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हो कि मतलब सेलेक्ट कर सकते हो, वो ई में डालने की ज़रूरत नहीं है, और फिर उसमें प्रॉपर्टीज़ कर सकते हो। यानी कि आपको कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई, और वहाँ आई बताया आपने, फॉर एग्जाम्पल हेड है मेरा आई, उसका डॉट आप टेक्स्ट चेंज करो, उसका स्टाइल चेंज करो, एंड वी कैन डू दैट। लेकिन फिर हमें बार बार वो करना पड़ेगा, इसलिए हम कहते हैं कि नहीं, पहले वो किसी वेरिएबल में रखो। नाउ दिस वेरिएबल विल बी पॉइंटिंग टू दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको दिस विल बी लाइक ए प्रोनाउन, जैसे मैंने कहा पहली बार इफला इज ए गुड स्टूडेंट, ठीक है ना। अब मैं बार बार इफला नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा शी, सो प्रोनाउन, सो शी इज़ दिस, शी इज़ दैट, शी इज़ दिस मच, ओके, एंड शी इज़ fatty whatever, and so same way we have the e will is the handle to that object. First you need some selection mechanism. Selection you can do using the anything like id, the class name, the tag name, or the query selector and all, right? And out of these you can select, once you are selected you drop the selection reference in the e, because this is an object, so e will be a reference, okay. Now e will be like you create an object and you have a reference variable which is pointing to that object, it will be same scenario. Now e is the handle to that object, and that object will have a lot of methods. Now using this e you can access all those methods to change
the whatever you want to change. You can change its HTML, you can change its CSS, you can change its behavior, you can change everything you like. Even you can create new buttons here, you can create new text boxes here. Okay, that means you create a totally new HTML which was not there in your document. You started painting on your canvas. The painting which was not there, you can create your own painting on the canvas. बात समझ आ गई? सिंपल स्टोरी है. ठीक है जी. I think that's all for today. Any questions? You are welcome. कोई सवाल?